and lungs. One more, the skin is also there. But if the question is asked children in the exam that name the parts of the human excretory system, so do not name these all organs. Apart from the kidney, the other organs which are involved in the excretion process, that is very true. It is liver, it is lungs, and one more, skin is there. Did you understand, Sneha? Sneha, could you get it what I said just now? Yes, ma'am. Okay, so this is for everyone. Try to remember that we are having, our body is having all these organs which act as the excretory organ. लेकिन जब अपन excretory system की बात करते हैं, excretion में जो major organ, the organ which is helping in removing the nitrogenous waste, that is kidney. Okay, and kidney is able to do that work along with the other organs, other parts of the system. So I hope last period you have listed. Anjan, can you मैम सो name the part? लिवर लंग्स और स्किन ये ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में थोड़ी हेल्प करेंगे. एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. ओके, ये भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में. कैसे करते हैं तो अपन पहले सिस्टम पढ़ ले, फिर अपन इनको डिस्कस कर लेंगे. इज इट ओके स्नेहा? ओके मैम. हाँ, तो वील डिस्कस अबाउट इट दैट हाउ. अब इतना अपन के 10th में आपको नहीं पढ़ना है, बट रिमेंबर दीज ऑर्गन्स आर आल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन प्रोसेस. सो इन ब्रीफ आई विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. ठीक है. सो अंजन इज टेलिंग मी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Anjan, can you unmute your mic and speak up? लास्ट टाइम आप लोगों ने लिस्टिंग तो कर ली थी ना. हाउ सो मच प्रॉब्लम स्टिल? Yes, Yes, So ma'am. why ma'am. parts of the human excretory system? Keshav, can you tell me? Keshav, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. केशव, केशव, अरे वेट ना, आई वांट दीज चिल्ड्रन आल्सो टू स्पीक अप. ये लोग कभी नहीं बोलते हैं. हाँ केशव. Yes, ma'am. हाँ बोलिए. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? हाँ केशव. अरे मालूम है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर. इशिका जोशी, कैन यू टेल मी? Yes, ma'am. Ma'am, kidney, Kidney, ureter. uterus, urinary bladder, urethra. Wait. Keshav is also saying. Okay, Ishika. हाँ केशव. Ma'am, kidney, ureter और urinary bladder हाँ और urethra. ठीक है. ये सब लास्ट पीरियड में नोट किया था कि नहीं केशव? मैम वो लास्ट क्लास में था नहीं. आप नहीं थे क्लास में? Yes, ma'am. अच्छा, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए. याद रखिए, जितना अपन क्लास में कर रहे हैं वो लेक्चर नोटबुक में हमको सब मिलना चाहिए व्हेन वी विल बी मीटिंग. Okay, and you know the marks for your notebooks also you will be getting. So maintain it. Whether it is online, offline, आप घर में बैठ के भी जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो सब प्रॉपर नोटबुक्स मेंटेन करना है, बोथ द नोटबुक्स. एंड डेट वाइज, जैसे 9th में करने को हमेशा हम बोलते थे, डेट वाइज आपके लेक्चर नोटबुक में होना ही चाहिए. सो दिस इज फॉर एवरीवन. Okay, so now we were discussing the structure of the kidney. Okay, so we start with it. Shreya, now can you tell me that what is kidney, what is the shape of the kidney, what is the location of the kidney? Shreya now. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, there are two kidneys present, हाँ. and they are present in the lower abdomen, and Yes. they are bead-shaped and reddish in color. Yes. Okay. Then out it is covered by. So you can write down, children, everyone, that each kidney is covered by the tough covering and internally divided into, who will tell me? आउटर कॉर्टेक्स. Outer cortex and medulla. Outer cortex and inner medulla.
हाँ, वेरी गुड, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अब वेदर इट इज मैम कॉर्टेक्स, what you told at first, मैम 8 kidneys. CORTEX, कॉर्टेक्स। नो मैम, उसके पहले कुछ वो और बोला कवर्ड था वाला। ना। मैम हाँ, किससे कवर्ड था? yes. The kidney is covered, means outer covering is a tough covering. So you have to say that outer or externally it is covered by tough covering. Each kidney is covered by the tough covering, and internally it consists of the outer cortex and inner medulla. Noted everyone? Yes Now, ma'am. Yes, each kidney, remember children, millions of nephrons are there. Okay, and these nephrons are the tubular cells, so you call them uriniferous tubules. अपन क्यों मैम इसमें बोलते हैं इंटरनली क्या uriniferous? था? यस कार्तिकेय, मैम इसमें इंटरनली क्या था मैम, वो मेडुला वगैरह? उसको ना दो रीजन्स में, आई विल सेंड द वन डायग्राम। ठीक है, हम एक डायग्राम भेजेंगे, उसमें पूरा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का मिल जाएगा, बिकॉज इन योर टेक्स्ट बुक तो इट इज नॉट गिवन। उस फिगर को मैम देख वो के आप दिखता क्या था? मतलब बाहर का जो पोर्शन है, आप समझ जाओ कि किडनी तो एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी सेल्स है। ठीक है, अब वो सेल्स को अपन दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, मतलब किडनी को इंटरनली हम दो रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। बाहर का जो पार्ट है उसको अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज द मेड्यूला। ठीक है, और कॉर्टेक्स और मेडुला में दोनों ही पार्ट में रिमेंबर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसको अभी आप समझेंगे। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में वन पार्ट इज इन द कॉर्टेक्स, तो अदर पार्ट इज इन द मेडुला, फिर थर्ड पार्ट अगेन गोज इनटू द कॉर्टेक्स। मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है, फिर वो नीचे जाता है क्योंकि वो ट्यूबुलर सेल्स है, फिर वो फिर से कॉर्टेक्स में आते हैं। एंड देन देयर millions of those nephrons which I am saying, they all will open in the region which is known as the pelvis. So pelvis is the fan shaped structure where you find सारे के सारे nephrons open होंगे, और वो फिर कहाँ पर ओपन हो जाएंगे, दैट इज कनेक्टेड टू योर यूरेटर। तो यूरेटर को ही आप डायग्राम जो बुक में बना हुआ है, जस्ट ट्राई टू सी दैट डायग्राम चिल्ड्रन। द किडनी, from each kidney is arising the ureter. तो यूरेटर तो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जब अपन अंदर की तरफ देखेंगे, मींस इन द किडनी ना, दैट ट्यूब फॉर्म्स अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। उस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं pelvis, that is known as the pelvis. And then we find it comes out into the, अब functions अपन डिस्कस कर चुके थे, इतना ही बस आपको याद रखना है किडनी के लिए। now you know the functions of the kidney. So I got one just now someone has written that you want to know what is osmoregulation. तो अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है filtration of the blood, that is the first important function of the kidney, filtration of the blood, and during that filtration process all the nitrogenous waste will be removed out along with the excess ions and excess water. So now second function you have written osmoregulation. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। हर सेल का प्रॉपर एक फिक्स्ड concentration है, that is the ionic concentration I am talking, and that is maintained by this kidney. ओके, एंड आयंस कितने होने हैं, कम होने हैं, ज्यादा होने हैं, वो सब अंदर बाहर होते रहते हैं, एंड कांस्टेंट आयनिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन। ओके, एंड एक्सेस है तो ब्लड में चला जाएगा, कम है तो ब्लड से सेल्स में पहुंचता है। सो दिस इज मेंटेन्ड अगेन बाय द किडनी। The water and ionic balance in the body is maintained by the kidney, and this process of maintaining the water and ionic balance is known as osmoregulation. मैम Regulation, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है? osmotic pressure मतलब सेल्स के अंदर का प्रेशर। ओके, सेल्स के अंदर का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन
of the substances from एंड जो आयन्स है वो कहाँ से आएंगे? आयन सारे अपन जो भी खाना खाते हैं उससे सारे आयन्स मिलते हैं, ऑल मिनरल्स. Our body gets all the mineral ions through the food. ओके और फिर वो सारे एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंच जाते. ब्लड उनको लेके सारे सेल्स में जाता है. ओके सेल्स में वो पहुंचने के बाद में एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है एंड दैट इज ओनली हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ज्यादा है दैट विल ओनली कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज द सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन. अंडरस्टूड स्नेहा नाउ? यस मैम. ठीक है सेल के बाहर जाना है वाटर, एंडोस्मोसिस होना है कि एक्सोस्मोसिस होना है, ये सब ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है. ओके और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कौन कर रहा है हर सेल का? किडनी. किडनी. ओके सो इन टोटलिटी व्हेन यू सी सो किडनी इज डूइंग दिस वर्क. फॉलोड? यस मैम. कैसे किडनी करेगा तो वो आप समझ जाओ कि ब्लड में आयंस है. ब्लड फिल्टर होता है किडनी में. अगर ब्लड में ज्यादा आयंस है, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इफ दे आर मोर तो दे विल बी फिल्टर्ड आउट, दे विल कम इनटू द यूरिन. okay and then through the urine it will be going out, it will be removed out. और अगर ज्यादा नहीं है needed, if it is needed in the body so then you find that kidney will not filter them out and the urine will have lesser concentration of the salts. तो जो लोग ज्यादा सॉल्ट खाते हैं याद रखिए कुछ लोग ज्यादा सॉल्ट पसंद करते हैं, कुछ लोग कम सॉल्ट पसंद करते हैं, लेकिन बॉडी को तो एक फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए. But your tongue, some people's tongue require more salt, some people's tongues needs less salt. Okay तो आप खाएंगे तो उसके हिसाब से, लेकिन बॉडी को तो इतना नहीं चाहिए. So what the kidney will do? What the kidney will do? हाँ स्नेहा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा. हाँ हाँ यस सौरभ. किडनी क्या करेगी? filter ऑस्मो it out. रेगुलेशन. कर देगी. मैम हाँ अगर Filter ज्यादा out. सॉल्ट होगा हाँ तो वो फिल्टर कर देगी. फिल्टर कर देगी, जितना जरूरत है उतना रखेगी बॉडी में, बाकी सब फिल्टर कर देगी. ठीक है तो इस तरह से दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ मैम वी टेक. कम होगा सॉल्ट तो फिर? कम होगा सॉल्ट तो वो लॉस नहीं होने देगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा. ओके it will retain it. If it is less so that whatever amount of the salt you are taking it will be retained in the body. मैम सॉल्ट की कमी से कोई बीमारी नहीं होती? अरे बहुत होती है, सॉल्ट की कमी से कैसे? बहुत बीमारी होती है. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. लास्ट पीरियड ऑल्सो आई वाज डिस्कसिंग कि सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्व इम्पल्स कंडक्शन. ओके नर्व इम्पल्स कंडक्शन, हमारा सारा नर्वस सिस्टम उसी पर काम करता है. तो इफ द सोडियम विल बी लेस रिमेंबर द इम्पल्स कंडक्शन डज नॉट गो प्रॉपर्ली एंड देन द पर्सन इन एक्सट्रीम कंडीशन पर्सन में लूज द मेमोरी ऑल्सो, सारा भूल जाते हैं. फिर जैसे ही सोडियम सही होता है तो सब याद आ जाता है. ठीक है अब अगर वो परमानेंट लॉस हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते. ओके सो डोंट थिंक दैट कि सोडियम के कारण भी सारी सबकी याददाश्त जाती है. ओके ऐसा भी मत समझ लेना. ओके सो दिस इज वन रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सोडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो अपन ने किडनी कंप्लीट कर लिया. नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो क्विकली नोट डाउन यूरेटर्स. सो राइट डाउन दे आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. लिखते मैम जाओ. ये डायग्राम में फनल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे जो आप बोल रहे थे पे? हाँ व्हाट यू डू अभी, हाँ दैट ना आई विल बी प्रोजेक्टिंग नेक्स्ट पीरियड. ठीक है नेक्स्ट पीरियड में हम इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन कर देंगे. फॉलो आई सेंड यू वन फिगर टुडे, यू ट्राई टू सी दैट, यू ड्रॉ दैट डायग्राम एंड नेक्स्ट पीरियड वंस अगेन आई शो द सेम डायग्राम एंड आई एक्सप्लेन. ओके ओके मैम. तो अभी अपन आगे का कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज यूरेटर. सो टेक अप यूरेटर. So they are the tube-like structures arising from each kidney. Arising from each kidney. Opening into the urinary bladder. Opening into the urinary bladder.
So Archit, can you tell me from where the ureters arise? Archit, unmute your mic. Archit, can you try? पता नहीं ये बच्चे करते क्या है, समझ नहीं आता है. हाँ, इतने सारे बच्चे हमको सब दिखते रहते हैं, but when I call your name, do you just pass the time or what? Charu, can you speak up? Charu? Charu is also not there. That means Dwej, can you tell me from where the ureters arise? Ma'am, Charu has written in the Ma'am, chat Charu box. is saying something in the chat box. अच्छा, okay, I'll check it. अच्छा, Charu is there, but will not say anything. Okay, Ishika Gupta will tell me from where the ureters arise. चलो जल्दी से बोल दीजिए. Ma'am, from both the kidneys. From both the kidneys. And where do they open then? Urinary bladder. Urinary bladder. Okay, now write down the function. Harshit, can you tell me what is the function of these ureters? Harshit Jain. हर्षित बता सकते हैं, अनम्यूट करिए माइक को. नो मैम. अरे कौन बता सकता बिना हमारे बताए? जतिन, कैन यू टेल? Ma'am, मैं It बताऊं? carries Yes, because ma'am. Yes, ma'am. Carries the Ma'am, filtered. may I answer? It carries Ma'am, the they carry waste urea from to be lungs to moved the into the ma'am, from kidney to the urinary urinary bladder. bladder. अरे अदर्स शुड नॉट से. हाँ जतिन, आप बोलिए. Ma'am, they carry the urea to the ma'am from kidney to the urinary bladder. हाँ, वेरी गुड. लेकिन यूरिया नहीं, यूरिन. Yes, ओके, ma'am. व्हाट दे विल कैरी. तो किडनी में यूरिन बन जाता है, फिर इट विल कम इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द यूरेटर्स. और यूरेटर्स का सिर्फ एक ही काम है कि किडनी से यूरिन को लेके आना यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, सो दैट इज, यू कैन राइट डाउन क्विकली that it transports the urine from the kidneys to the urinary bladder. Good, Jatin. You are noting the things nicely, Jatin. Yes, ma'am. हाँ, डेट वाइज हमको देखने मिलेगी ना कॉपी बाद में आपकी, Yes, ma'am. अच्छे से. Yes, ठीक है. ma'am. ओके, त्र्यंबकेश, कैन यू स्पीक अप? त्र्यंबकेश विल नॉट स्पीक. ओके, सो नाउ वी टेक अप द यूरिनरी ब्लैडर. त्र्यंबकेश, माइक ऑन करके बात करिए. So the next part, that is the third part of our excretory system, is the urinary bladder. So urinary bladder, it is the small membranous bag-like structure. It is a membranous bag-like structure present in the lower pelvic region. Present in the lower pelvic region. Ma'am, present at the Present in the lower pelvic region. मैम का माइक म्यूट है. पता नहीं. नहीं आ रही ना? ओके, मैम अब आ रही है. अब आ रही है. हाँ, तो वो हमारा ना, आई वॉज जस्ट ट्राइंग अगेन कि कंप्यूटर से हो जाता, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है. वो मोबाइल से ही करना पड़ रहा है. दैट इज देयर. ओके,
ठीक है, चलिए. तो urinary bladder, how many students have understood what is urinary bladder? I want Yes, ma'am, understood. Abhishek Bhargav will tell me what is urinary bladder and what is the location of it. Abhishek Bhargav. Ma'am, हाँ. yes, ma'am, it store urine and ma'am, it store urine until it is released through the urethra. It is Great, Abhishek. देखो, I want you all children to listen the question and answer accordingly. My question was having two parts. One is that what is the structure of the urinary bladder, and the second question was that what is its location. आपने दोनों पार्ट छोड़ के तीसरा पार्ट बताया अभिषेक. तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू आंसर इन द बोर्ड एग्जाम द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन योर क्वेश्चन पेपर. इज इट क्लियर? अब अभिषेक बताओ. माय Yes, फर्स्ट ma'am. क्वेश्चन, स्ट्रक्चर. अभिषेक. ma'am, it present in हाँ. yes, पहला. ma'am, it is membranous bag-like structure. हाँ. ओके. नाउ लोकेशन. And ma'am, it is present in lower pelvic region. लोअर पेल्विक रीजन. ठीक है. सो नाउ आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. अब फंक्शन बताओ अभिषेक. व्हाट यू वर सेइंग. Ma'am, it store urine until it is released through the urethra. Correct. So the urine is temporarily stored in the urinary bladder. So everyone can write down that the urine is temporarily stored in the urinary bladder before voiding out. Children, the act of release of that urine, we call it as voiding. So voiding, voiding out. Ma'am, can you please repeat the sentence? Before it is voided out. I said that the function of the urinary bladder is it stores the urine temporarily before it is voided out. Ma'am, why it is called membranous? Because it is not very hard muscular. Okay, it is a bag like and it is having a thin membrane. Okay, मतलब covering जो है ना वो thin है. So that's why ना it is having good expansion capacity. क्योंकि वो full भी हो जाता है ना तो वो फिर expand हो सकता है. Are you getting? So it is little flexible. You followed what I said? ठीक है. एज मींस कितना भी उसमें यूरिन स्टोर होता जाए तो इट हैज गॉट सम पार्ट विथ विच इट विल बी एक्सटेंडेड. ओके, वो एक्सटेंड हो जाता है. सो वी से इट इज मेम्ब्रेनस. मींस थिन वॉल. यू कैन से थिन वॉल्ड आल्सो. ओके, इट इज thin wall. So how many students have understood? Yes, ma'am, understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am, understood. Yes, sir. Now we take up the last part of this system. So last part is the urethra. So write down, it is a small tube-like structure. It is a small tube-like structure. It is a small tube-like structure arising from the urinary bladder. Arising from the urinary bladder. And function of it, it serves as a passage of urine. It serves as a passage of urine.
It serves as a passage of urine. That is, when the urinary bladder is full, when the urinary bladder is full, the urine is voided out. The urine is voided out through the urethra. Through the urethra. So clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, questions? Wait. Am I audible now, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes or no? Am I audible? yes, Yes, ma'am, you Yes, are ma'am. audible. You are audible. You can hear me now? Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. And my screen is visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जल्दी से I'm showing you the system what we have studied just now. So see this video where it is 46 now. So just a small video. See it. It is explaining that what are the parts of the human excretory system. Audible now? Excretory system. Yes, ma'am. Okay. The human excretory system, or more specifically, the urinary system, is comprised of the kidneys, the ureters, the urinary bladder, and the urethra. The excretory process begins in the pair of kidneys, which are housed just below the ribs in the back of the upper abdominal region and sit on either side of your vertebral column. Although the left kidney is positioned slightly higher than the right, both are identical in their structure and function. In adults, each kidney measures approximately 10 to 13 centimeter long, roughly 4 to 5 inches, and 5 to 7.5 centimeter. Children, you can note down this dimensions which are mentioned here. Wide, roughly 2 to 3 inches. The renal artery carries both oxygenated blood from the heart and wastes to the kidneys, entering at the hilus. Once the blood has... Now try to see this structure, children. This diagram, am I audible to everyone now? Yes. Yes, ma'am. So this structure is showing the internal structure. This diagram is showing the internal structure of the kidney. The outer lighter part which you are finding, children, that is known as the cortex. और अंदर आप देख रहे हैं that loop structures are there which are reddish in color. This is the part of the medulla. Okay, so in the medulla region only you find that the cortex is going inside. So that is why it is forming these pyramids. इसको अपन बोलते हैं renal pyramids. Okay. Could you see, children? This above one is this. Can you see my cursor, children? Yes, ma'am. This outer part is the cortex. Okay. फिर ये जो आपके structures दिख रहे हैं, these structures, these are the, what are these? Inner medulla. ना कॉर्टेक्स देखो मेडुला के अंदर ऐसे बीच बीच में चला जा रहा है. So this way it is forming the renal pyramids. You call it as renal pyramids.
and then see the artery and the vein both are entering into the kidney. Okay, and this opening of the kidney where the blood vessels are entering and the ureter is arising, we call it as hilus. Is this much clear to everyone? Yes or no, this much clear? How do we spell hilus? Hilus, Hilus. Okay, and above this kidney you are seeing this structure. Could you see my cursor? ये अपना adrenal gland है. Okay, kidney के ऊपर Ma'am, what adrenal is gland. hilus? Hilus is the opening of the kidney through which the blood vessels enter. Through which the blood vessels enter and ureter arise. And ureter arise. So now see the video once again. Has been filtered, it is returned to circulation through the renal vein. The kidney itself is comprised of an outer cortex and an inner medulla. The medulla is darker in color than the cortex and contains conical structures known as the renal pyramids. The cortex is a lighter colored tissue and includes extensions known as the column of Burton, which are found between the renal pyramids. The renal cortex contains both blood vessels and nephrons, small units that function to filter the blood and remove waste products inside the body. Nephrons are the basic functional units of the kidneys, and there are about 1 million within each kidney. Each nephron includes a glomerulus and a renal tubule. Each glomerulus sits within a cluster of capillaries in a shell-like structure known as the Bowman's capsule, and as a whole, they will serve as the basic filtration unit. Blood enters the glomerulus through an afferent arteriole and leaves through the efferent arteriole. Wastes pass through the glomerulus and into the Bowman's capsule. In the nephrons, fluid flows from the Bowman's capsule into the proximal tubule, then into the loop of Henle, and finally into the distal tubule. It is in these tubules where urine will be concentrated in order to minimize the water loss. From the interior side of the kidneys, two tubes known as ureters descend and open into the bladder, which opens out through urethra. The final fluid from the distal tubule enters the ureters and is collected in the urinary bladder, and from there it is excreted as urine. Summary: the human excretory system is comprised of a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder, and urethra. Renal arteries bring waste-filled blood to the kidneys. Nephrons are the functional units of the excretory system. Blood filtration occurs in the glomerulus. The tubules of the nephron concentrate urine to minimize water waste. So, how many students have understood? Ma'am, I had a doubt. Ma'am, the So, artery which brings blood to the kidney is called renal artery. renal artery, What's the vein called? renal vein. It is the Okay. renal vein. Remember, the renal word is associated with the kidney, as pulmonary word is associated with the lungs. That will be the renal artery, renal vein is there. So clear to everyone? Now see, just now you have seen the structure of the nephron. So nephron structure, I'll take it in detail in the next period. Okay, you will understand. Today we have completed with the human excretory system and all the parts involved in that. Okay, and the functional unit of the kidney is the, what is the functional unit of the kidney? Nephrons. 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 Nephrons.
So the structure of nephron or uriniferous tubule we'll take it in the next period. So the questions also, since it is 54, you have to attend other class also. Yes, ma'am. बहुत बड़ा Yes, ma'am. चैप्टर है ये. यस कार्तिक, इट्स वेरी बिग चैप्टर. अपना आधा सेशन तो इसी में निकल जाता है, बट आगे अपना बहुत कम है. ठीक है, सो वी विल बी मैम एबल टू उसमें जो और कंप्लीट.